अस्सलाम वालेकुम गाइस। इसमें मैं आपका जो सेकंड टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट मॉक जो मैंने कंडक्ट किया था, वो मैं चेक कर रहा हूँ। इंडिविजुअल फीडबैक भी आपको साथ साथ में दे रहा हूँ, और इसमें ओवरऑल आपको इस रिकॉर्डिंग से भी आप बाकी के टेस्ट का आइडिया ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने पूछा गया था कि इस डेमोक्रेसी रियली अ सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, जो आपने ग्रैंड टेस्ट 2 का अटेम्प्ट किया है, और ये जिसका भी टेस्ट है, Pakistan's current political and economic crisis हमने बता दिया। Currently facing political instability and economic fragility, only 4.5 रिजर्व रहते हैं। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर देती हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी तो ज़्यादा अच्छा रहता। श्रीलंकन पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे है, उसकी क्या मैनिफेस्टेशन है, कोई आप बताएंगे उसकी रिसेंट। ठीक है, जो ब्रेकिंग ऑफ असेंबली है, जो पॉलिटिकल रिफ्ट चल रहे हैं करंटली, पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान, डायनामिक पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज नॉट political crisis currently, political polarization है, political instability है, effective political institutions है, पाकिस्तान democratic movement, पीडीएम का आप मेंशन नहीं करेंगे, it is a democratic movement, it is not a political crisis, incomplete tenure of government, incomplete tenure of concurrent government और respective government, economic crisis in पाकिस्तान आ जाएगा आपके पास, ये आपने बता दिया। ठीक है, फिर हाउ डेमोक्रेसी, आप बताएंगे हाउ डेमोक्रेसी इज रियली, मतलब इज डेमोक्रेसी और इज, ये क्या ग्रामर आपने इसमें यूज किया। फिर डेमोक्रेसी इज रूल बाय लॉ एंड ओके, डेमोक्रेसी विल ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान, व्हाई नेशन फेल, आप इसको हाईलाइट करें। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस पे वे फॉर इकोनॉमिक सक्सेस, प्रोविजंस ऑफ इक्वल राइट्स ऑफ सिटीजन, political participation will ensure freedom of speech, will bring accountability, cases countries where democracy is grown, North Korea and South Korea, so this is uh, excellent thing कि you have added case studies, and इसमें नॉर्थ कोरिया डेवलप कंट्री थ्रू डेमोक्रेसी, डेवलप कंट्री फिट, और ये इसमें हमने मैप भी बता दिया है। अब मैप में एक और चीज़ आपने बतानी होती है, आपने बताना है कि भाई यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। जब आप मैप बताते हैं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपने इसमें की है। अमेरिका एंड मेक्सिको, ब्रिटेन, फ्रांस, इसके बाद पोलिटिकल एनालिसिस पहले बता सकते थे कि रोड ब्लॉक क्या है टू ट्रू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वो आपने इसमें मेंशन नहीं किया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, फास्टनिंग जियो पोलिटिकल जियो इकोनॉमिक ऑर्डर, वहाँ पे मिडल ईस्ट में इंट्रोडक्शन चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर आ गया। हेनरी किसिंजर जो है रिवीजन पावर चाइना एक्सचेंजिंग, फिर इसको उसमें आगे वो जिसने मीन ग्लोबल ऑर्डर, अब इसमें उसने यहाँ पे एंड पे इंट्रोडक्शन पे लेके हैं कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग मिडिल ईस्ट, उसका आपने तस्करा नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से आपका इंट्रोडक्शन इज नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक। इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना आपने इसको बता दिया, ओके। रशिया बता दिया, चेंजिंग ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर हमने बता दिया, चेंजिंग जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ऑफ मिडिल ईस्ट इन चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, रिवाइवल ऑफ नॉन न्यूक्लियर डील अपॉर्चुनिटी आगे बीच यूएस चाइना, इंक्रीजिंग ग्लोबल good relation, increasing good relation between KSA and Iran in China, Russia is part of the globe for the US. Changing geoeconomic interest in Middle East and changing global order, development economic flows in the wake of Ukraine war, very good. US unwavering support to Qatar Israel project, revival of Iran's economy, additional oil production। अच्छा, इसमें अब्राहम अकॉर्ड कहाँ पे गए? ठीक है, इसमें फीफा वर्ल्ड कप को भी ऐड कर देते कि जो वो अपना सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सिटी ऑफ न्यूयॉर्क जो है वो भी ऐड कर देते, तो ये 3 चीजें आपकी जियो इकोनॉमिक्स में ऐड हो जानी थी, और इससे आपका क्वेश्चन और अच्छा हो जाता। अदरवाइज इट इज ऑल्सो गुड अटेम्प्ट, गिव इट 13 मार्क्स आउट ऑफ 20। And then in the next question, for some scholars on regional global issues, introduction Pakistan and US are strategically bound to develop some strategic partnership। क्रिस्टोफर जोफर, क्रिस्टोफर टैफलेट, आपने इसमें लिखा है इन सेक्शन पाकिस्तान। थोड़ा सा मैंने आपको कहा था रिसेंट, कोई आप फैक्ट से अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, वो आपने नहीं लिखा, आप हिस्ट्री में चले गए हैं। आप लिखें आफ्टर द विड्रॉल ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज स्टिल, पाकिस्तान एंड यूएस आर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब देयर रिलेशंस आर अगेन रिज्यूमिंग फ्रॉम स्क्रैच।
The point of convergence are gone now. ठीक है, हिस्टोरिकल थ्रेड से पाकिस्तान रीजन आ गया, पार्ट ऑफ ये इंडिया। अब ये जो एरो शो कर रहा है ये है वॉर इंडिया। ठीक है, दिस इज गुड, बट अगेन आपने मैप ड्राइंग पे, पाकिस्तान के मैप ड्राइंग पे इतनी प्रैक्टिस नहीं की। इट शुड बी डूइंग मोर प्रैक्टिस फॉर दैट। प्रैक्टिस एट बर्न पाकिस्तान एंड यूएस में रीजनल इश्यूज आ गया। इंडियन belligerence पाकिस्तान support from यूएस एंड यूएस strategic ally of इंडिया। अच्छा, रीजनल इश्यूज पे बाइंड करते हैं, क्लोज करते हैं, या इसमें आप इसको दो तरीके से करते हैं, पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस कर लें और पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस। दैट बाइंड टुगेदर में मेरे ख्याल से हम सिर्फ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स पे दोनों मिलते हैं। ये रशियन सॉरी अफगानिस्तान वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा क्लाइमेट वाले पे आ जाएगा, सोबियन ने पीछे अच्छा अटेम्प्ट किया था। कंबाइंड यूएस स्ट्रेटेजिक लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स एट बाइंड पाकिस्तान यूएस ऑन ग्लोबल इश्यूज आ गया। डिजास्टर इम्पैक्ट आपने, अच्छा ठीक है। चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर यूएस पाकिस्तान टू वॉर अगेंस्ट रशिया, पाकिस्तान यूएस global international pressure remain human for the binding factor of US and Pakistan। क्रिटिकल एनालिसिस आपने इसमें ऐड कर दिया है, तो दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। After that, Afghanistan in the introduction, Afghanistan is a prisoner of its geography. That's interesting question है again ये भी कि Afghanistan is a prisoner of its geography comment. So Afghanistan is the what what is this? I don't understand it. Is the heart of Asia होना चाहिए था, आपने पता नहीं heart of Asia लिख दिया। The strategic location of Afghanistan has made the country prisoner of its geography. Afghanistan is a landlocked country which is a big factor for its being prisoner of geography. The country is surrounded by Central Asian Republic and Pakistan. They have a global power. Only because of landlocked thing, it is a prisoner of geography. We have the hard terrain, and then the people, the tough people, and then the resource-rich country, Afghanistan, and its proximity with the Central Asia and other things. So all these things make it a prisoner of its geography. अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, आपने बता दिया, ठीक है। द ज्योग्राफी ऑफ अफगानिस्तान आपने बता दी, सही है। फिर अफगानिस्तान हैज बीन, अब आपने ईरान बताया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बताया, चाइना बताया, उसके ऊपर लिख दिया। अब इसके ऊपर अब अगेन मैप में आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं ऐड किया। फिर उसके बाद आपने बताया अफगानिस्तान हैज बीन इन्वेडेड बाय सोवियत यूनियन टू रीच द एंड इट्स सोर्स ऑफ द आर्ट आ गया। ये प्रोजेक्ट China Mountains China Afghanistan is a half terrorist organization, centric point of America towards the international decision power conclusion। अच्छा, इसमें हम हिस्टोरिकल जो हमने बता दिया ना ग्रेवयार्ड, उसके बाद जो करंट इसमें बता दिया, तो मेरे ख्याल से इट इज इनफ। बाकी चीजें भी ऐड हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा है, बट इन द गिवन टाइम एंड pressure you tell this question in a good way, so overall it is a good attempt। Okay, after this paper we have, so after this paper this is Laika। Okay, so I'm taking this paper Laika, I think। So Pakistan, and आपने outline क्यों लिखी है? You don't need to write outline, it's not required, but if you're writing it, maybe आपने किसी से पूछा, but क्योंकि ऐसा होता है कि डेवलपमेंट में हमें काफी चीजें और याद आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन Pakistan and the US relationships are like marriage in which both are unhappy but prefer to live together. Good. So from being the most allied ally to the strange ally,
two different times racing have been tossed and turned, or if they have spent real time. तो अगेन ये करंट अफेयर का अगर हम पेपर लेंगे तो रिसेंट आप इसको स्टार्ट करेंगे किसी भी फैक्चुअल स्टेटमेंट से, ठीक है। तो वो आपने फोकस रखना है उस स्टेटमेंट से स्टार्ट। आपने इसको किससे स्टार्ट रखना है, आपने फैक्चुअल स्टेटमेंट को जहन में रखना है और उधर से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने हाउ पाकिस्तान एंड द यूएस हैव बीन बाउंड टू डेवलप strategic relationship, पहले आपने डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कंट्रोल पार्टनरशिप का हिस्ट्री बता दिया आपने। एक्सप्लेन पाकिस्तान द यूएस अलाइनमेंट इन सर्च ऑफ कन्वर्ज गोल। यूएस तालिबान एक्सपेरिमेंट इन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड टेररिज्म आ गया। फैक्टर्स फाइंडिंग पाकिस्तान एंड इसको लिखेंगे यूएस ऑन रीजनल ग्लोबल रीजनल इश्यूज आ गया। एचएलसी आ गई, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान रिक्वायर्स एमिकेबल रिलेशन विद द यूएस इकोनॉमिक हेल्म के अंदर आ गया। इसमें आपने इकोनॉमिक हेल्म वाला बता दिया, ठीक है। और उसके बाद यूएस सेंसिटिव काउंटर चाइना बाइंड with Pakistan as India has more close relations with Russia. इसमें लिख सकते हैं यूएस फाइटर जेट। तो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल जो आपने यूएस फाइटर जेट S-400 की बात की है। तो मैप में अगेन एक चीज आपने मेंशन नहीं की थी, तो इसके कोऑर्डिनेट किधर हैं। तो ऑन ग्लोबल लेवल आ गया सिग्निफिकेंट फॉर यूएस पॉलिटिक्स बाइडेन स्टेटमेंट आ गया, न्यूक्लियर आर्सेनल है, रोए वर्सेस वेट केस हैज halted social aid receiving received by Pakistan. Here's my climate justice is brought to light by the global efforts. ये loss and fund आ गया and conclusion. So the presentation is good, the attempt is good. So the highest mark I can give you is 15. उसके बाद further indication question number 4. What is question number 4? It is um, is democracy really a solution, right? So democracy vis-a-vis Pakistan, democracy is flourished in the heart of nations, but it डेमोक्रेसी, अब इट आ गया। ये देखिए हमने स्टेटमेंट से लिखी है डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेसीज होगा। आपने इसको जो है वो चेक करना है कि क्या स्टेटमेंट आएगी। Since its inception, Pakistan has faced multiple frameworks of the government, nationalism, militarism. The struggle of 75 years being the nation to the pivot that democracy expressed from a government and has answer for the political and economic crisis. Experimentation phase through the lens of history आपने बता दिया, civilian bureaucracy, everything. हाउ डेमोक्रेसी इज द सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इससे पहले थोड़ा सा आपने कोशिश की है लिखने की, हिस्ट्री बताने की इकोनॉमिक क्राइसिस की और पॉलिटिकल क्राइसिस की। तो करंट अफेयर में अगर हमने इसको डील करना है तो हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल क्राइसिस बताएंगे। आप इसमें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल क्राइसिस का बताएंगे एंड कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक क्राइसिस का आप इसमें बताएंगे। तो इसके बाद ही ये बेहतर तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकेंगे। अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, how democracy is a solution for Pakistan's political and crisis, addressing political crisis, democracy role, formulation council, common interest, how democracy provides opportunity for building and message using and parliamentarians so that the British sense of reality, independent of the democracy demands accountability of the officials, law enforcement agencies, तो आपने बता दिया। एंड corruption perception index report है, and what we have on x axis, this is the ranking आ जाएगी यहाँ पे। How coalition parliament are the vector of democracy increased voter turnout is first established in the single quadrant, bringing each institution in the single quadrant. What does it mean? Military, civil, and this national interest. So this is again a good example addressing economic crisis. आ गया 15 years consolidated charter economy must be made, foreign policy circumstances, national interest, and party interest, democracy. All right, so this is again a good attempt.
देन फास्ट चेंजिंग जियो स्टडीज जियोइकोनॉमिक एनवायरनमेंट मिडिल ईस्ट आ गया आपका इंट्रोडक्शन मिडिल ईस्ट ग्लोबल फेयर ऑफ इमर्जिंग पावर्स एनवायरमेंटल द एनवायरनमेंट in the environment in the Middle East is all things is getting ये again good start आपने recent तक से start किया है इसको China believes in mutual trust non-aggression non-interference आगे Xi Jinping की statement है how the global order is changing अच्छा ये point इससे बाहर ना लिखें statement के अंदर उसके लिखे हैं double line से multiple economies are rising in the face of the United States dollar dominance in is diluting multiple environments on the rise global सेशन आपने लिखा how the global order is changing ठीक है इतने ज़्यादा पॉइंट्स लिखती हैं दो तीन इसके अलावा इसमें बाकी पॉइंट्स तो आने थे ना कि द डोमिनेंस और द राइज ऑफ रशिया एंड चाइना इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स वो अगर आप हेडिंग के फॉर्म में इसमें डाल देते कहीं भी तो ज़्यादा बेहतर होता जो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट इन द चेंजिंग बॉर्डर आपने लिख दिया है यूएस इज इलेक्ट्रिक टू बाय ड्रोन फ्रॉम ईरान आ गया यस एंड चाइना कन्वर्जिंग रिलेशन ऑन इकोनॉमी एंड आईटी have a 35G this and that's fine उसके बाद जी सलमान मीटिंग आ गई ऑयल के ऊपर एंड देन स्टेट बाबुल मंडप आ गया एंड ईरान है और पाकिस्तान है प्रेजेंट चाइना वर्ल्ड कप तो दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट आप इसमें क्या करेंगे इसमें मैप में शो करेंगे कि नॉर्थ साउथ किधर है और ईस्ट वेस्ट किधर है ये आपने बताना है और फिर जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया चाइनीज मैन पावर एंड एड इन फीफा वर्ल्ड कप ईरान चाइना 25 की स्टडी के लिए बनान स्टाइल डील ठीक ठीक है फिर अगेन इसमें आपने मेंशन मिस कर दिया अब्राहम अकॉर्ड जो है वो भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर ठीक है और I2U2 जो एक कोऑपरेशन मनी है वो भी स्ट्रेटेजिक उसमें बैलेंस में हमने बतानी है इसके अलावा जो चाइना और सऊदी अरेबिया का जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो भी मेंशन कर देंगे और इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी वगैरह का भी मेंशन करेंगे कि दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी इन द वेक ऑफ emerging global order so we need to mention के first in the Middle East so why Middle East matters इसको आपने ये भी नहीं लिखा कि why ME matters ठीक है उसमें थोड़ा सा एक पहले चार्ट बता देती उसके बाद आप लिख देती कि जो है कि अलाइनमेंट चेंज इन अलाइनमेंट आप इसमें लिखें चेंज इन अलाइनमेंट अगर इसकी हेडिंग दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाता थोड़ा सा otherwise it is good but ये चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती थी I will give you here 12 marks next is big promises made in European inspection council conference of parties are they the appointment is are they hollow and void ये में किया गया है outcome of COP no Pakistan can utilize the opportunity loss and damage fund financial that is something loan investment infrastructure development collaborative education philosophy important renewable energy and subsidies अच्छा ये इसका सोर्स आप अगर लिखेंगे तो बेहतर होगा क्या चीज़ हमने किया डेलिब्रेशन ऑन द स्मॉल डैम्स इन द लोअर प्लेन ठीक है मैप को थोड़ा सा इम्प्रूव करें मैप ड्राइंग को आप थोड़ा इम्प्रूव करें पाकिस्तान के and then legislation on the land over the that restructuring financially structuring our life. Okay, so this is an excellent attempt, like I must say. Okay, so this is infrastructure, agriculture sector का हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया पाकिस्तान being the trade defense agriculture sector कौन सा समझो पाकिस्तान आपने का लिंक भी दिया है और climate change such as heavy mentioned that with alarming rising temperatures semi-productive agriculture and material such as okay how climate change a question क्या है agriculture sector is the bedrock and current situation let me read the question again agriculture sector keeping with the
changing climate situation, what steps are required to modernize agriculture sector in Pakistan and to avoid emerging food crisis? Okay, so here we have the impact of climate change too. तो इसमें आपने how climate change induced agriculture sector certain hindrances and hindrance of economic development. Climate induced farming, rising global temperature and low agriculture productivity. Okay, heavy monsoon rain, a flood of climate change, the loss of agriculture productivity, flood evidence of changing climate sector. Pakistan flood situation report आ गया seasonal temperature, Government is trying to modernize the agriculture sector and to automate food crisis. जैसे टेक्नोलॉजी आपने इसमें बता दिया है तो हमें ग्रोथ एंड लोन एंड इंटरेस्ट क्वालिटी की एक तो so fourth attempt overall, and then you have written evaluate the fast changing geostudies, its situation, the changing pattern of emerging global order, which is moving world from many multiple the Middle East has significant strategic and geoeconomic feelings and had attracted the great power towards its importance. And we have case study so that's a very important set point. So the foremost Gibraltar वगैरह आपने लिख दिया इसमें. तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मिडल ईस्ट इसके अंदर आपने इसके स्ट्रोक पॉइंट्स लिखे हैं. इसमें दोबारा मैपिंग में डायरेक्शंस आपने देनी थी वो आपने इसमें नहीं दी. उसके बाद आपने एक्टर्स इन द मिडल ईस्ट इंटरनल एक्सटर्नल एक्टर्स आ गए. The US and geopolitical interests and expect to maintain its hegemonic attitude, alliances, Iranic deal. This is US stagnant relations and US can create a state of unrest. The Iranic deal and the US can compromise hegemonic role of US, the case and Iran conflict. US, UAE and Israel fight for. Geoeconomic importance of Middle East आपने बता दी. बताना चले कहीं पे. अब इसमें यूएस is dependent oil reserves, dependence of Europe on oil reserves in Middle East, most important China, globalization has started diplomatic communication case in Iran and then confusion. अच्छा इसमें आपने काफी चीजें इग्नोर कर दी हैं कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जिस तरह भी पीछे सोबिया ने भी किए, लाइका ने भी किए, अरुषा ने भी किए, तो उनके अगर आप पेपर देखेंगे आपको उनमें से पॉइंट और फर्दर इसमें मिलेंगे. प्रेजेंटेशन तो अच्छी है लेकिन उसमें काफी चीजें ऐड हो सकती थी. आपने कुछ ही पॉइंट्स को ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया और कुछ मेन चीजों को आपने इग्नोर कर दिया. वो आप इसमें ऐड कर सकती थी. This question for some scholar Pakistan. Okay, so it is evident from history to Pakistan. But again इसको हिस्ट्री से नहीं करना था. इट इज सीए पेपर. ठीक है, तो सीए में उसको रेलिवेंट से स्टार्ट करना. However, there are some factors which increase the strategic partnership keep tied, for example. What? However, there are some factors which encourage this strategic partnership keep tied. For example, regional, there are some factors which are keeping the relationship intact आ सकता था. I think तो ज़्यादा बेहतर होता. Factors which find Pakistan and US together in recent issues आपने लिख दिया है. फिर उसके बाद आ गया है intention of US to establish peace Pakistan occupied government in Afghanistan, Pakistan, to control on terrorism and aim to be chief of Pakistan relationship, importance of Pakistan strategic relations over global issues. Okay. US intended to develop good diplomatic participation for globalization and economy. US intent, US कैसे इंटेंट कर रहा है. क्रिटिकल एनालिसिस आपने इसमें लिख के कंक्लूजन. क्रिटिकल एनालिसिस कंक्लूजन की ऐसी जरूरत नहीं है. एक चीज लिखते हैं. ओके, सो ये पेपर है साकिब अली का.
अस्सलाम वालेकुम जी। साकिब, भी आपका पेपर है। तो पाक यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशन का आपने लिखा है, रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स have gone through bumpy roads as well as smooth in different times, considering the convergence of interests and divergence. Many factors responsible. अभी इसमें अगेन आई मेंशन्ड many times in the class as well कि आपने जब भी करंट अफेयर का पेपर करना होता है तो किसी फैक्ट से स्टार्ट करें। तो यहाँ से फैक्ट से स्टार्ट होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसका अब क्या करेंगे? वह पाकिस्तान एंड यूएस are bound to develop some strategic partnership. Pakistan and US are somehow bound to develop some strategic partnership despite many oversights of Taliban rising militants in Afghanistan in the point. Yes, this is a relevant point. इसको आपको स्टार्ट के लिखना चाहिए था। बाकी पॉइंट्स भी ठीक हैं। फैक्टर्स तालिबान पाकिस्तान रीजनल लेवल पे कौन से हैं? तालिबान गवर्नमेंट आ गई। फिर उसके बाद आपने ग्रोइंग मिलिटेंट काबुल फॉलोइंग यूएस विड्रॉल आ गया। टीटीपी राइज आईएस ग्रुप एंड अदर attack on India's diplomacy of strategic autonomy. US is pretty much about India's diplomatic strategic autonomy and in Pakistan to check on India recently provided Pakistan. तो ये जो है ये बेस्ट एग्जांपल आपने जो है वो इसकी दी है, बेस्ट नरेट किया है। फिर बाइंड एट ग्लोबल लेवल साइड ऑफ क्लाइमेट चेंज आ गया, यूएस चाइना अकोमोडेशन, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान डिपेंडेंसी फ्यूचर फॉर यूएस। इसमें आप इसमें एक्सपोर्ट लिखते हैं पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा जो है वो यूएस की तरफ है। ऐसे फॉर स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज आ गया, increasing trade and technology are the resolution of issue of divergence through robust diplomatic efforts and then this conclusion. So this is an excellent attempt. बस इसमें आप क्या कर सकते थे, थोड़े से मैप और सब पॉइंट्स जो है वो ऐड कर देते बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में। अभी सारे पैराग्राफ ऐड की गई है तो ज़्यादा ओवर डाइवर्स हो जाता, बट ओवरऑल इट इज़ नाइस अटेम्प्ट। तो आगे है बिग प्रोमिसेस मेड इन सीओपी, एनालाइज आउटकम्स ऑफ सीओपी 27। आपने इसमें बताया है जी कॉन्फ्रेंस पार्टी नवंबर इन द, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान विल नॉट रिमेन इन पाकिस्तान, देयर वर डिफरेंट प्रोमिसेस वर मेड। क्रिटिकल एनालिसिस आ गया, लॉस एंड डैमेज फंड आपने बता दिया, ठीक है। दिस फंड विल इनेबल, अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल बता दें कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या उन्होंने इसका फ्रेमवर्क बताया है, क्या किया है, वो आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। CO2 थ्रेशोल्ड आ गया, एंड देन promotion of low emissions energy आ गया, नो consensus on phasing fossil fuels आपने लिख दिया। Adaptation measures are included in COP27. How can Pakistan best utilize possible opportunities arising from conference? Loss and damage fund आ गया, बट इसमें पाकिस्तान के लिए क्या measures हैं? प्रमोशन ऑफ लो न्यूक्लियर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी फॉर पाकिस्तान कंक्लूजन। अब मैंने आपको जब ये मैंने लेक्चर दिया था तो मैंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान को एक्शन प्लान आप लिखेंगे इसमें कि व्हाट एक्शन प्लान पाकिस्तान मस्ट फॉलो, कि अगर उसने इससे फायदा लेना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कि वो क्या एक्शन प्लान होगा पाकिस्तान के लिए, वो आप इसमें लिखेंगे तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो लिखते थे तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स and in this question, so I will give you 14 out of 20. And then there is no blinking at the fact that democracy is really a solution of Pakistan's current political population. This can believe other point. Okay. And then a bird's eye view political class in Pakistan हमने बता दिया, इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान आपने बता दी, करंट। वेरी गुड। इससे आप इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, पॉइंट्स फॉर्म में आप इसमें लिख देते, ठीक है, पॉइंट फॉर्म अगर आप वो कर देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि थोड़ा जुम्बल अब लग रहा है यहाँ पॉइंट्स फॉर्म इस तरह करते अगर आप, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं प्रेजेंटेशन में भी। हाउ इज डेमोक्रेसी का सोल्यूशन टू पाकिस्तान करंट पॉलिटिकल क्राइसिस, अर्ली इलेक्शन पॉपुलर। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने ना अंडरलाइन नहीं किया चीज़ों को, वो करेंगे और नेक्स्ट लेवल पे अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी हो जाएगी। स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आ गया, हाउ इज डेमोक्रेसी सोल्यूशन टू पाकिस्तान करंट इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, FTI इज स्टेबिलिटी inclusion. So again, this is another good attempt. So keep it up.
Okay, after you we have Abdul Rahman. तो ये अब्दुल रहमान आपका पेपर है। ओके, तो अब्दुल रहमान आपका पेपर चेक कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन टू, यूएस पाकिस्तान का था। यूएस पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बाउंड टू मुश्किल क्वेश्चन। यूएस इज मॉनिटरिंग पाकिस्तान इज नैरोली रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा। विद टेररिज्म यूएस इज आल्सो concerned with rise of China as it is a threat for its hegemony. Its international arena like with Pakistan facing many challenges regarding to economy, climate change, tourism, and growing conflict with its all rival India. US interest in Pakistan हमने बता दी। यूएस मीन पाकिस्तान को इन्वॉल्व डायरेक्ट सीपैक। सीपैक में क्या इंटरेस्ट है यूएसए का? डिस्टेंस मिलिट्री इंटेलिजेंस न्यूक्लियर, पाकिस्तान में इसका क्या इंटरेस्ट है? लाइक इसको थोड़ा सा डिफाइन भी करें कि क्या किस किस्म का इंटरेस्ट है उनका। वाई पाकिस्तान नीड्स यूएसए आ गया। पाकिस्तान इज मिलिट्री डिफेंस फाइनेंशियल यूएसए assistance for IMF technological assistance. USA and Pakistan are strategically bound for partnership. Regional and global factors responsible for strategic partnership, strategic and moral implications. Rise of China threat for US hegemony. अब इसमें आपने ना पॉइंट को लिंक नहीं किया कि रीजनल उसके पॉइंट बाइंडिंग एक्टर्स क्या हैं। कि अभी पीछे अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग सुनेंगे जो मैं शेयर करूंगा, तो पीछे जो साकिब अली का क्वेश्चन था दैट वाज गुड कि किस तरह जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो आप उसमें लिख सकते थे दैट वुड बी गुड एडिशन। ठीक है, ताइवान क्राइसिस आपने बता दिया। ताइवान क्राइसिस कहाँ से आ जाएगा इसमें? यूक्रेन चाइना वॉर कहाँ से आ जाएगी? बिल्कुल समझ नहीं आ रही। चीजें हमने डाली हैं बट वो उसका लिंक क्या बन रहा है यहाँ से? Taiwan is second largest economy in the world. It is a major exporter. Taiwan is directly connected with South China Sea. USA wanted that Pakistan will support Taiwan to restrict China. कैसे पाकिस्तान सपोर्ट करेगा रिस्ट्रिक्ट चाइना के लिए? इसमें हमने हमें नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह होगा। ठीक है, फिर उसके बाद राइज ऑफ तालिबान इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडियन रिवलरी। तो आपके जो पॉइंट्स है ना उसके दरमियान रिदम नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी नहीं है कि किस तरह वो क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं। अभी पीछे जो दो तीन स्टूडेंट्स ने चेक किए हैं तो उनके क्वेश्चन अच्छे थे। और डेमोक्रेसी बिलीव टू बी द सोल्यूशन, आपने डेमोक्रेसी के ऊपर बताया है कि डेमोक्रेसी इज बिलीव टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इन पाकिस्तान इट्स स्टिल क्या लिखा आपने? failed to achieve its objective owing to its incomplete implementation. Country is facing many economic and political crises due to incomplete implementation of democratic values. There are many political crises such as polarization, blame game, manifold among provisions and discourses. बहुत लेंथी इसमें हो गया। करंट पॉलिटिकल क्राइसिस आपने बता दिया, अच्छा किया। पॉलिटिकल ब्लेम गेम, मिलिट्री इंटरवेंशन एज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड सारा कुछ ब्लेम गेम पॉलिटिशियन पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस इसी तरह हमने बता दिए हैं। हाई इन्फ्लेशन रेट आ गया पाकिस्तान और बाकी। हाउ डेमोक्रेसी इज सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। रूल ऑफ लॉ, इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ, प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज इन प्रोविंसेस एंड बाकी सारा कुछ। एनएफसी वार्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ, गुड गवर्नेंस, इलेक्शन। तो ये क्वेश्चन बेहतर है। इन दिस यू विल गेट 14 मार्क्स बट इन द प्रीवियस वन यू वोंट गेट गुड मार्क्स। रिकॉर्डिंग से भी मिल जाएगा। जी, नेक्स्ट पेपर, evaluate द फास्ट चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजी का आपने क्वेश्चन वन अटेम्प्ट किया है। तो लेट मी सी हाउ यू हैव डन इट।
On paper, open. So in the 21st century, world is drastically changing from year to year. What? मंथ टू मंथ, वीक टू वीक एंड आवर टू आवर, ये क्या चक्कर है जी? ये करंट अफेयर का पेपर है, दिस इज नॉट योर ऐसे पेपर, यू कैन नॉट स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको रेलिवेंट फैक्ट या स्टेटमेंट से स्टार्ट करें, इस तरह स्टार्ट नहीं करेंगे। In this changing world, geostrategy and economic environment is also changing, especially medicine alliances are formulating militaries. For example, secret economic corridor between Russia and Iran along Caspian Sea. What is Caspian? Strategic deal between Saudi Arabia and China and Iran. Okay, so yes, this is good. आपने शुरू में जो पहली स्टेटमेंट ली है वो रेलिवेंट नहीं लगी मुझे, बाद में अच्छा है। चेंजिंग इन्वायरमेंट आपने बताया, अब ये पर्पस क्या है इसका मैप का जो आपने यहाँ पे बना दिया है? व्हाट डज द मैप शो? ठीक है, इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग। व्हाट डज द मैप शो? इज इट शोइंग समथिंग इम्पोर्टेंट? नो। बैकग्राउंड आप इसमें ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये ईरान जो है वो अगेंस्ट यूएसए है, इस तरह लिखते हैं एरो लगा के। ठीक है, आप इसमें लिख दें कि ये जो है ओमान, यूएई, कतर वगैरह ये प्रो यूएसए हैं। ठीक है, इसमें यमन में जो है वो प्रॉक्सी वॉरफेयर चल रही है। ठीक है, इस तरह की अगर चीजें आप इसमें ऐड कर देंगे तो इट विल बी रेलिवेंट, अदरवाइज इट विल रिमेन इरेलीवेंट। बैकग्राउंड आपने दे दिया, पेट्रोकेमिकल एग्रीमेंट हिस्टोरिकली देयर वर स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, बोथ द कंट्रीज साइंड। बैकग्राउंड से स्टार्ट करने की जरूरत वैसे नहीं है, कंटेम्प्रेरी से स्टार्ट करें, इसको किसी आर्गुमेंट्स में आगे लिख सकते हैं। प्रॉक्सीज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, रोल ऑफ यूएसए आ गया। ब्रीच रिलेशंस आ गया। जमाल खशोगी किलिंग जबरन इन डिमांड ऑफ केस टू इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन, गुड। स्ट्रेटेजिक डील बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड चाइना हमने लिख दिया है। सीक्रेट इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने बता दिया, द कॉरिडोर इज बेसिकली रूट ऑफ 3000 किलोमीटर, आपने इसमें एक्सप्लेन किया है। रशिया एंड ईरान बोथ आर द कंट्रीज अपॉन whose sanctions are imposed। ठीक है, aim of this corridor enhance trade, Iran China 25 के cooperation आ गया, and then we have conclusion। इतना मुझे इसमें मैक्सिमम चीजें आपने ऐड नहीं की, अभी पीछे वाले जो क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा उसमें से आपने चीजें निकालनी है और वो ऐड करनी है। ठीक है, तो आई विल जस्ट गिव यू 10 मार्क्स आउट ऑफ 20 फॉर दिस क्वेश्चन। अफगानिस्तान इज प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी। Afghanistan is a prisoner of geography. Afghanistan geographical location plays an important role in global affairs. Afghanistan is prisoner of geography because Afghanistan connects the Central Asia and Afghanistan also connected Middle East, is also connected with Middle East. क्या mistakes हैं grammatical भी, as well as South Asian countries. So we can, who we can, so it can be said, आप लिख सकते हैं। अफगानिस्तान ग्रेवियर ऑफ मेजर पावर्स, आप इसमें पॉइंट के कौन कौन से बिग पावर्स हैं वो थोड़ा सा बताएं। अफगानिस्तान स्टेट क्राफ्ट फॉर ब्रिटिश, आपने हाँ ठीक है यहाँ पे लिख दिया है। ग्रेवियर फॉर सोवियत लिख दिया है, ग्रेवियर फॉर यूएसए लिख दिया है, एंड रीजन ऑफ अफगानिस्तान इन्वेजन। अफगानिस्तान कनेक्ट विद सीएआर, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई। तो उसके बाद लिख दें कि जो अफगानिस्तान जो है वो ट्रेड रूट है बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड देन अदर, इट ऑल्सो कनेक्ट, इस तरह के जो है वो कनेक्टिविटी कॉरिडोर लगा सकते हैं। इस पे तापी पाइपलाइन है वो लगा सकते हैं, इसके अलावा कासा पाइपलाइन है, वो कासा एनर्जी कॉरिडोर है वो आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। अफगानिस्तान कनेक्टेड, ये आपने वही लिख दिया मेन चीजें इसकी स्ट्रेटेजी, बट व्हाई इट कैन बी सेड दैट इट इज अ ग्रेवयार्ड फॉर, इट इज अ प्रिजनर फॉर इट्स ज्योग्राफी। प्रिजनर का मतलब ये है कि उसकी जो जो करंट situation है, that is due to its geography, and then it is due to its geography it has remained the center point of global power conflict। तो आपने जो ये लिखा ना अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ मेजर पावर, इसको अगर यहाँ पे चेंज करके लिख देते कि ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी अफगानिस्तान रिमेन्स द सेंटर और पिवट ऑफ ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, तो उसमें अगर वो आ जाता है ये चीजें तो सारा कुछ रेलिवेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये मेन चीजें हमने हेडिंग्स को रेलिवेंट बनाना है, और आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप इसको कंप्लीट करें, बट स्टिल यू डिड नॉट कंप्लीट इट। ओके, आफ्टर दिस वी हैव
ओके, सो आफ्टर दिस द पेपर है हमारे पास फातिमा का, फातिमा सलीम। तो फातिमा सलीम, wait a second. Where is Fatima Salim? तो आई डोंट नो, आपका मुझे जो है वो नंबर नहीं मिल रहा, तो इसको मैं एक मिनट देखता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट पेपर है अभी ये किसका है, सलमा का। तो सलमा पर, ओके सो सलमा, आई एम गोइंग टू टेक द पेपर हियर। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम Islamabad long-lasting objective to have a dependent government in Kabul has finally burned to the ground with the presently ruling Taliban, who instead of providing security assistance to rise Taliban Afghanistan. What question is this? This question is, which paper is this? Salma, I don't know. Which paper is this? This is not grand. That's two. So I think this is mock one. So where is the mock two? तो आपको ये मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा। Evaluate fast changing, आपने बताया as changing winds of new world order are demanding new strategic alliances and economic partnership. Middle East as hub of energy resources, the major part of competition for world power. Interesting start, very interesting start। इसमें अब आपने मिनट सेकंड, यस, एंड देन इसमें आप कही हैं कि I2U2 के बारे में बात कर दी और पार्टनरशिप के बारे में बात कर दी। Negative meeting 22 regarding case Middle East, regional lecture against Iran, Lebanon, American base. So this is an excellent introduction where you have added everything related to current perspective. How Middle East is changing geostrategically and through new economic nexus. Changing wind of Middle East and of Saudi Arabia from ultra conservative to ultra modernism, from ultra, I don't think so. You can say ultra, simple modernism to Bahraini regional architecture. Abraham Accords, I2U2, Lebanon, Maritime Day, new negative meeting for regional peace. Yes, it is important. ओके, उसके बाद आप गए हैं सऊदी अरेबिया चेंजिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी के बारे में हमने बताया, जो मैं पहले भी बता मेंशन कर रहा था, न्यू रीजनल आर्किटेक्चर अगेंस्ट ईरान, जिसमें एंटी ईरान आर्किटेक्चर इज बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ दिस मीटिंग है। कौन सी मीटिंग है जी, करने की मीटिंग इसमें ओके, इंटरेस्टिंग। I2U2 इकोनॉमिक कॉपरेशन आ गया। लिबनान मैरीटाइम डील आपने इसमें बता दिया, अब्राहम अकॉर्ड का इसमें बता दिया, एंड इम्प्लीकेशन न्यू जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें थोड़ा सा फर्दर चीजें भी ऐड की जा सकती हैं कि जो ईरान के साथ 25 ईयर एग्रीमेंट है चाइना का, ठीक है, इसमें हमने वो नहीं बताया कि मेजर जो एक्टर्स हैं उनकी क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जिसमें चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, रशिया हो रहा है,
इसके अलावा इसमें जो यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आपने मिस कर दिया है यूएस की। ठीक है, इसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा इसमें आपने जो रशिया की इन्वॉल्वमेंट है वो आपने मिस कर दी है। बाकी चीज़ें आपने इसमें मेंशन कर दी हैं और वो किसी ने इस तरह मेंशन नहीं की जिस तरह आपने मेंशन किया है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए था। वेपनाइजेशन ऑफ द रीजन आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, फिफ्थ अमंग मुस्लिम उम्मा, फोस्टरिंग रीजन फ्रेजिलिटी इन मिडल ईस्ट, disturbance in energy supply to the world, for Pakistan affects Middle East, excellent point and conclusion. So other than अगर आप वो ऐड कर देती तो you will get 15, but here 15 is not a bad number. Pak-US strategic partnership. Pak-US relations are always studying keyboard with some Pak America has used Pakistan Daily Times में आपने बता दिया relating to above mentioned statement. In the arena हेनरी किसिंजर लिखता है। अच्छा, ये आपने ज्यादा लेंथी थोड़ा सा कर दिया इंस्ट्रक्शन, वी डोंट नीड टू राइट दैट लेंथी वन। क्रेडिट पार्टनरशिप विद द यूएस एंड पाकिस्तान आपने बता दिया है। द यूएस स्टडीज पार्टनरशिप फैक्टर्स डिफेंस कीप इट क्लोज टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान असिस्टेंस आ गया। अमेरिका एज स्प्रिंग बोर्ड एंड बैलेंस विद पॉलिटिकल इंस्पिरेशन यूएसए आ गया। हाउ इट इज फॉर मिडिल रिलेशन डिस्टेंशन on aforementioned factors strategically bound these two countries together. Sector finding Pakistan in the US and regional and global issues. Finding forces in the region, finding trends in global arena आ गया बहुत। और उसके बाद इन द changes may not be safe. So, so all changes are gone. So again अगर हम start कर दें तो this paper is really interesting. आपका इंट्रोडक्शन भी अच्छा है, रेलिवेंट है। उसके बाद ये भी पॉइंट आपने ऐड किया। ओके, सो न्यू रीजनल आर्किटेक्चर। अब इसमें अगर हम सारा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम कोड से हमने इसमें बता दिए, implications भी बता दी, और सोर्सिंग अलाइंसेस आ गए सारे इसके अंदर। सब मिडिल ईस्ट न्यू अलाइंसेस आपने इसमें बता दिए एंड देन दैट्स। तो इसमें सिंपल क्या ऐड किया जा सकता था, यूएसए के अलाइंसेस और चाइना का जो रिसेंट इसमें जो जी जिनपिंग की मीटिंग थी और इसमें जो बाइडेन की मीटिंग थी, ओपेक प्लस इसमें जो था वो हेडिंग दे के वो आप इसमें ऐड कर देती, अदरवाइज इट इज गुड। इसके बाद आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपने इसमें बता दी। ठीक है, इसके बाद हम चले गए इन द एरिना। आपने यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताई है, दैट्स फाइन, एंड देन फैक्टर्स फाइन पाकिस्तान एंड यूएस टुगेदर, and then in the region counterterrorism policies in place in Afghanistan for sustainable trade and amicable relations with China. Global affairs आपने इसको अच्छा डील किया है, and then it is conclusion. So one thing is missing is the use of maps. Where are your maps? इसमें सिर्फ आपने इसकी आउटलाइन दी है। सिचुएशन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी, सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस आ गए, फीबल जुडिशियल सिस्टम आ गया, poor governance and impunity corruption, fragile democracy, more democracy, and conclusion। ठीक है, तो अगर आप उसमें लिखते हैं तो बेहतर होता है। आई थिंक आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है।